All right. So am I live right now? Let me see, baby. मैं लिखूं तू आ जाए मैं जीत लिखूं तू जीत जाए oh come on man ए oh भाई webs okay so am I live now okay am I live let me see let me see let me see okay so perfect perfect I am live okay all right so these are my recording videos. Okay, so welcome back, guys, to another uh, stream of what do you say? Stream of test bench, and in this video or in this stream, uh, I am going to sit about like 2 to 3 hours, maybe, and let me just show you one sec. Okay, so if I go over here, I say PHP artisan serve and then we'll also npm run our node and okay so we just come over here let's say मैं लिखूं तू आ जाए okay anyways uh so as we were talking about the test bench over here. So test bench is something, if you don't have an idea, test bench is something that I am creating, and you can say it's now. Why not? Okay, so maybe this is okay. So this is about the you can say a simple clone from Postman. I got the idea from a Postman in my first stream. It's a collective stream. I can't sit around like 5 to 10 hours. Maybe I will do tonight because today is Saturday night. So maybe why not? So the main reason to come over here at this platform on YouTube and doing this stream is just that I want to do something in my life, and rather than just working as a developer in some company or something like that. I don't want to see myself when I like turn around like 30, maybe 35 or something. I don't want to see back and see myself doing nothing, just scrolling the Instagram or something. I don't want to do that. So that is the main reason that I came here, and I'm going to do this. The next reason is that I would say, from because it's a start of the video, so I would say that the next reason is that I am from Pakistan, and I can speak pretty smooth English, but you see, I didn't want it to. I wanted to create this channel and boost this channel with Urdu videos so that my Pakistani fellows they can understand, and of course they can understand English. The person who's in IT field, they can understand, but you see, I am also in field, and there are a lot of people who doesn't know this, and who doesn't know English very well, and they can't really understand it. They have this. If they need some kind of improvement, it reminded me of my friend, and he needed some kind of improvement, and he said he needed improvement in English. So that's why I am not doing this in English, even though I am speaking English. But I would say that this would be the start कि मैं अब उर्दू बोलूँगा. Anyways, so I'm just like happy. I don't have many much subscribers. I don't really care about that. If you subscribe, then that would be really grateful for me. Because
it's a resource for me for the money, of course. And even though there are a lot of things you can do to get the money, but this is the main, like this is also, you can say कि एक ऐसा chance है मेरे पास where I can do really something grateful and for the people. And if I see myself after many more years, I can see something I have done with my life. So there are a lot of other things too that I am doing, but for the time being, I wanted to do this because अगर कल को you know uh, मैं दादा अबू बन गया तो मेरे बच्चे कम से कम ये तो कहेंगे ना कि जो दादा है वो अपने ज़माने में यूट्यूब वीडियोस बनाते थे. Anyways, this is just for the fun type of a moment in my life. So let's just start this very keen project because I really like the idea. There are a lot of, like you can say, there are a lot of uh, there were a lot of projects in my mind that I can start creating, but this is the one that I really like because this has some kind of a tricky part where you can send the request and you get the response. Because it's pretty in my mind, it's pretty easy in my mind, but I think there are a lot of difficulties that you can like do. You can like face them. So without further ado, let's just start this. So as you can see that I have this in my last video, I didn't really created this one, the get method, the input and the send method. I didn't really created that in my last video. I started one stream, but that stream, because of the slow internet, वो सही तरह से like चल नहीं सकी. तो लाइक उसमें मसला ये आ रहा था कि मैं तो ऑनलाइन बैठा हुआ था, लेकिन मेरा नेट कभी आ रहा था, कभी जा रहा था, कभी था ही नहीं. तो लाइक मैं बैठा रहा हूँ और मैं स्ट्रीम कर ही जा रहा हूँ और मैं लाइक चलता चलाता जा रहा हूँ सारा कुछ. लेकिन मैं अचानक मेरे लाइक 1 डेढ़ 2 घंटे बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं लाइक पता नहीं कितना टाइम हो गया था मुझे, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी, लाइक एक घंटा, 1 डेढ़ घंटा तो हो ही गया था. तो मैं गया, मैं जाके यूट्यूब पे देखा तो वो स्ट्रीम तो वो कही जा रहा है भाई अभी आनी है. तो दैट वाज द सिंपल मीनिंग कि भाईजान आपकी जो है ना लाइक स्ट्रीम नहीं चली, लाइक उसने अपलोड ही नहीं किया, लाइक वो लाइव हो ही नहीं सका ड्यू टू द सम नेटवर्क कनेक्शंस प्रॉब्लम्स. बट एनीवेज टुडे आई जस्ट चेक और सब कुछ सही से चल रहा है, नेट भी आ रहा है, दैट इज़ रियली फाइन, टोटली फाइन. सो इन माई लास्ट वीडियो व्हाट आई डिड इज़ दैट कि मेरे पास ये दो इस तरह की ये चीज़ें थी, मैंने इन दोनों को लाइक सेपरेट किया था. यहाँ पर मेरे पास एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था बिकॉज if I come back and if I show you that in my dashboard I have this sidebar, which is this one. It will also create some problems for me, of course. But for the time being, ये जो है वो एक like idea है, वो ये है कि it will create the collection, and in collection you will have some folders just like this one, like ये collection है, sorry. This one again has some folders. Then we will also expand that the folders, and then we will get some request. और रिक्वेस्ट आप वैसे भी लाइक बना सकते हो. सो आई विल नॉट लाइक यू कैन से कि मैं इसको क्रिएट कलेक्शन नहीं, बल्कि मैं इसको लाइक कुछ प्लस या फिर कुछ इस तरह का रख दूँगा. जो शुरू में मैं चाहता था वो ये था कि मैं इसके ऊपर लाइक एक यहाँ पर एक इनपुट हो और उसमें आप लाइक सर्च कर सको अपनी रिक्वेस्ट विद द नेम ऑफ द रिक्वेस्ट, कि जो भी नेम रखो आप रिक्वेस्ट का, और एंड के ऊपर एक प्लस का बटन हो जो कि ये वाला बटन हो, और उसके ऊपर मैं क्लिक करूँ एंड देन देयर विल बी अ मोडाल एंड देन इट विल आस्क यू कि आप कलेक्शन बनाना चाह रहे हो, आप फोल्डर बनाना चाह रहे हो, या फिर आप एक सिंपल HTTP रिक्वेस्ट बनाना चाह रहे हो. So you can do that, but also if you click on over here and then I will give something like drop down or something, इसके ऊपर क्लिक करके वो कोई HTTP रिक्वेस्ट, या फिर मैं नेस्टेड कुछ नहीं बनाऊंगा. इट विल जस्ट बी अ सिंपल होगा लाइक कलेक्शन, देन कलेक्शन हैव फोल्डर्स एंड देन फोल्डर हैव रिक्वेस्ट. इट विल नॉट बी लाइक फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर. आई डोंट वांट टू डू दैट, लाइक दैट्स जस्ट कॉम्प्लिकेटेड. द मेन मकसद जो है ना वो ये है कि मैं रिक्वेस्ट वगैरह कर सकूँ और मुझे जो रिस्पॉन्स में डाटा कुछ यहाँ पर आना शुरू होते हैं. बट एनीवेज लेट्स जस्ट गो थ्रू कोड के हम जो वो कोड किस तरह कर रहे थे. सो दिस इज़ माई रिस्पॉन्स कंपोनेंट. आई हैवंट टच्ड इट येट. ये वाला जो रिस्पॉन्स कंपोनेंट है पूरे का पूरा, ये कंपोनेंट तो नहीं, एक डिव छोटी सी लगी है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑफकोर्स एक कंपोनेंट बना लूँगा. एंड
then I have this component which is sender request, and I have types which are coming from the web.php, I think. Yes, this is the one. So types. So लास्ट वीडियो में जो मैं लाइक पोस्ट कर रहा था, स्ट्रीम कर रहा था, उसके अंदर मैंने कुछ इस तरह किया था, एंड इट गेव मी सम काइंड ऑफ एरर कि आई डोंट नो, कैन नॉट यूज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आफ्टर नेम्ड आर्ग्यूमेंट। आई डोंट रियली अंडरस्टूड कि ये क्या एरर है, आई डोंट नो, लेकिन यू विल सी कि दिस इज़ द लाइन एंड दिस इज़ द लाइन। ये जो पूरी की पूरी लाइन है और ये जो पूरी की पूरी लाइन है, इट्स अ सेम थिंग। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ओवर हियर। अगर मैं इसको कमेंट करूं और उसको अनकमेंट कर दूं, तो यू सी के this is the same thing. I have return, I have inertia, I have render, I have component, dashboard, props, array, types and type. This is the same thing. I don't know कि I don't really know man कि ये ऐसा मतलब क्यों मुझे वो एरर दे रहा था या फिर किस तरह का सीन है। I don't really know। मतलब मैं इसको डीबग करने की कोशिश की, मैं देखा कि ऐसा क्यों आता है ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं था। सो ये जो टाइप्स हैं, असल में मैंने क्या किया था, मैंने डेटाबेस सीटर में मैं अगर जाऊँ, तो यू सी आई हैव गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड देन डिलीट। और मैंने एक टेबल बनाया था विच वाज रिक्वेस्ट टाइप्स। तो रिक्वेस्ट टाइप के अंदर मैंने सिर्फ उसको क्रिएट कर दिया, नेम था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, और नेम गया, वैल्यू गई, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। अगर मैं फॉर एग्जांपल वापस आऊँ, तो यू सी आई हैव मैं ये जो टाइप्स हैं ये मैं किधर से ले रहा हूँ, ये रही टाइप सारी की सारी मैं यहाँ से इकट्ठी कर रहा हूँ, और इकट्ठी करके मैं यहाँ से डैशबोर्ड में भेज रहा हूँ। और डैशबोर्ड में अगर मैं आऊँ, तो यू सी कि मैं इसको एज अ प्रोप ले रहा हूँ, और सेंडर रिक्वेस्ट के अंदर एज अ प्रोप मैं इसको पास कर रहा हूँ। और अगर मैं सेंडर रिक्वेस्ट में जाऊँ, तो यू सी कि मैं उसको अगेन एज अ प्रोप गेट कर रहा हूँ। और ये जो जितनी भी टाइप्स हैं, इसको मैं यहाँ पर, टाइप्स अगर हैं, टाइप्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड देन टाइप्स डॉट मैप, उस मैप के ऊपर ड्रॉप डाउन डॉट ऑप्शन ऑन क्लिक लगा के गेट दिस टाइप, टाइप डॉट नेम, टाइप डॉट नेम। और यहाँ पर मैंने एक स्टेट बनाई यूज स्टेट के नाम से, जो कि मेरी ये टाइप होगी, और वो टाइप मेरी यहाँ पर डिफाइन हो रही है, ये जो आपको नज़र आ रही है। सो द डिफ़ॉल्ट टाइप विल बी द गेट। और यूआरएल अभी मैंने सेट वगैरह नहीं किया, आई वांटेड टू सेट दिस, लेकिन एट दिस पॉइंट मैंने ये चेक किया कि भाई जान मेरा तो चल ही नहीं रहा, लाइक स्ट्रीम चल ही नहीं रही, एंड देन आई स्टॉप द स्ट्रीम एंड देन आई डिड नथिंग। लेकिन आज मैं जो है वो उससे आगे लाइक परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। एज यू कैन सी वी हैव दिस वन, बट द वेरी वेरी व्हाट डू यू से, आई हैव व्हाट उसका क्या नाम था, ऑल्टरनेटिव। मुझे एक ऑल्टरनेटिव है पोस्टमैन का, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। आई डोंट रियली यूज़ पोस्टमैन, लेकिन उसका जो अल्टरनेटिव है, मुझे उसका नाम भूल गया, पता नहीं क्या था, इंसोमनिया या। तो इंसोमनिया में असल में ये चीज़ है, इंसोमनिया इमेजेस, कौन सा, पोस्ट रिक्वेस्ट, ओके। तो आई थिंक ये मुझे अब जो है वो वाला दे देगा। So you see the very beautiful thing in insomnia is that okay, when I do something like uh, this is the one maybe, so now so you see कि मैं for example अगर post क्या, तो I mean मैं असल में कलर चेंज करने की बात कर रहा हूँ। So I don't know, ये रहा, आई थिंक दिस इज, ये तो उसने वैसे ही नाम चेंज किया हुआ है, बट इट्स काइंड ऑफ अ थीम प्रॉब्लम। लेकिन मुझे जो है वो लाइक कलर बहुत अच्छा लगता है, लाइक if I click on post, it's is post now. Lekin let's just change the color of the post method. Maybe I don't know. Oh, and one more thing, which I am, you can say, type dot name to upper case. Can I do this? Ah, perfect. And I can also do the same thing over here to uppercase. One sec. Okay, perfect. So now, like ये वो वाली थोड़ी सी, one sec. Oh, it's changing the input. That is fine. I think it's fine. It's changing the width of the input, but that is totally fine. I mean, we don't really care about that. Anyways, so this is our main component, जिसके अंदर जो है वो हम इसके अंदर जो है वो हम लाइक
अपना यूआरएल वगैरह लिखेंगे एंड देन वी विल सेंड एंड देन विल गेट द रिस्पॉन्स परफेक्ट. बट नाउ अगर मैं कोशिश करूं कि एक सेकेंड इंसोम्निया पोस्ट रिक्वेस्ट इमेजेस, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल इसका देखूं ना, तो ये असल में इसने नीचे क्या किया होता है. You have something like I don't know, open image in new tab. So you have get request, you have this one, and you have okay, parameters. Okay, you have parameters, you have body, you have auth, you have headers, and you have docs. I am not going to do something about the docs. I will pass the body, I will pass the auth, and I will pass the headers. Yeah, why not? Yeah, fine, fine. So parameters, I don't know, URL preview. So it says okay, okay, okay. So the parameters जो है वो सिर्फ literally मुझे सिर्फ जो भी URL का preview है वो मुझे दिखा रहा है, and it will be so okay. तो ये कह रहा है send and then there is a drop down, send, resend. The send method, if I say resend and if I do something different, drop down में resend, send, I don't know, I mean send ही ठीक है. What I'm gonna do with the resend भी send ही होगा ना. So why should I have to do that? So in a body we will pass the JSON. For the time being we will not include something else. We will only include the JSON part. And in auth then we have a auth token अगर आपने इस तरह की चीज़ सेंड करनी है. And then we will have headers. Headers में content type ये वो वगैरह वगैरह वो हम किसी कॉपी जगह कर लेंगे, कॉपी वगैरह कर लेंगे कहीं से. And then we will have this. And one sec, let me see another one. One. Okay, so this is the one. So if I say open image in a new document, so we have JSON. Okay, so now I don't have that preview. वो preview किधर गया? But we will show the preview and then we will have the JSON. हम totally JSON ही दिखाएंगे. और उसके बाद we will have the auth, क्यूरी हम यहाँ भी पास कर सकते हैं वैसे तो. ये देखो ना, यहाँ पे सिर्फ सेंड का मेथड है, तो दिस इज़ फाइन नाउ ना. So I think this is fine. So this will be the preview. Okay, so the preview is for the जो भी डाटा आया आपके पास. Okay, fine, fine, fine. वो उधर था लेकिन ये इधर है. I wanted to clone this insomnia, but it doesn't matter. So you see, this is the filter that I'm talking about. कि ये वहाँ पर जो है वो फिल्टर आ जाएगा एंड देन वी विल पास द ड्रॉप डाउन के भाईजान आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हो और यू कैन वो पास आओ. और मुझे वो पोस्टमैन का बहुत अच्छा लगता है कि वो एक बड़ा सा मोडाल ओपन हो जाता है एंड देन उसमें जो है वो लाइक बड़े बड़े कार्ड बने होते हैं. व्हाट यू वांट टू क्रिएट लाइक फोल्डर और समथिंग लाइक दैट. You have a lot of things to do that at that point. But anyways, let's just go with the simple thing. The first thing what I will do is that let's just create those tabs. So I will not create on my own because I don't copy, I steal. So I will go to tailwind CSS tabs. Okay, the flow byte जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. So we have these tabs: dashboard, settings, contacts, and disabled. Okay, so one sec. ये तो ठीक है लेकिन शहजादे वो मुझे वो भी तो दिखाओ ना. डाटा क्या इधर 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 उधर डाटा कैसे होना है. लेकिन एक सेकेंड, हमारे पास टैब्स यहाँ पर आ जाएंगे. वन सेकेंड, लेट्स सी. तो ये अच्छे से मुझे मिलते हैं ना तो वो करेंगे. दिस वन हैव एसवीजी. नो नो डैशबोर्ड. लेकिन ये चलेगा नहीं because we would have to do with the react part कि उसकी कौन सी जो है वो हमने स्टेट ओपन करनी है और कौन सी बंद करनी है. तो इसमें भी डाटा पास करना पड़ेगा. एंड वी विल हैव द फर्स्ट वन वुड बी द बॉडी जिसमें आप जेसन वगैरह पास कर सकते हो. सेकंड वन वुड बी द लो मैं भूल गया हूँ यार. ओके, बॉडी, द ऑथ एंड देन द हेडर्स. तो तीन ये चीज़ें हम जब लेके चलेंगे एंड जो प्रीव्यू वगैरह होगा वो हम नीचे दिखा देंगे.
So that is fine. The first one would be the body, which you can only pass the JSON object. If I click on a body, it will preview like some kind of you can say, what do you say, JSON. और ओथ में आपके पास सिर्फ एक इनपुट होगी जिसमें आप वो ओथ सेंड करोगे, और हेडर्स में वी विल पास सम काइंड ऑफ लाइक, अभी के लिए सिर्फ हम सिंपली सिर्फ उसको दिखा देंगे कि ये हेडर्स जो है ना पास कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जितना भी लाइक अच्छा कर सको तो आप कर सकते हैं. So okay, fine. Let's just copy this one and let's see what happens now. Okay, so I have this one send. Where is the send button? Okay, so this is the send button. I have this div and ये जो border है भाईजान, अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो you see this is the one he is doing that. If नहीं ये रहने दो. But I want to create something over here. देखा? If I remove the border, it's gonna be, oh fine, back. So this one would be the environmental variables. और यार ये तो insert मेरे से कैसे हो जाता है. I would simply say some p2 and I would say to do for environmental variables. Okay, so to do रहने देते हैं, उस्ताद मज़ा नहीं है. Okay, or you can say just add the br tag and it will go. Okay, perfect. And now let's just do that. That is the difficult part. और ये div भाईजान ऐसे ही बीच में फिक्स हुई हुई है. Again reformat the format. Anyways, okay, so this text input, this one and this one, ये मैंने फ्लेक्स बनाया और इसकी मैंने ये divs 3 रख दी थी. अगर मैं फॉर एग्जांपल इन यार okay, अगर मैं फॉर एग्जांपल इन तीनों divs को उठाऊं और मैं एक कंपोनेंट बना लूं और उसके अंदर, सो आई विल हैव द, इसको क्या कहें, सेंडर रिक्वेस्ट कंपोनेंट्स, इसको क्या कहें, इस पूरे को क्या कह सकते हैं, टूल बार, सेंडर रिक्वेस्ट टूल बार. एंड द सेकंड जो नीचे बनाएंगे हम उसको क्या नाम देंगे, आई डोंट नो, मे बी विल सी. लेट्स जस्ट कम ओवर हियर, कंट्रोल बी, एंड इन कंपोनेंट्स वी विल क्रिएट sender request. Let's just create one more folder and we'll say sender OS components toolbar. I don't know, ये फिर इसको भी इसके अंदर ही होना चाहिए था. ये मेन कंपोनेंट है, साइड बार यहाँ पे आ गया. नहीं, आई थिंक के let's just give it like this and we'll pass this one over here. और अभी ये मुझे कहेगा कि भाईजान मुझे मिला नहीं कोर्स, तो हम क्या करेंगे, सेंडर रिक्वेस्ट को दोबारा इंपोर्ट कर लेंगे दिस वन, और अब ये मुझे मिल जाएगा. परफेक्ट. सो कम ओवर हियर, से सेंडर रिक्वेस्ट, और सेंडर रिक्वेस्ट के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे एंड वी विल नेम दिस toolbar .jsx. It's fine. ये above वाले टूल बार होते हैं, तो अब इसे RF, okay. So what we will do is that कि इसको मैं सारे को यहाँ से उठाऊंगा और टूल बार में जाके सिंपली सिर्फ पेस्ट कर दूंगा. I know baby, I know. क्या कर रहा है ये, JSX myself, but okay. Sorry, my mistake again. We will do this one over here, man. अब सुकून है. तो ये नहीं उसको मिला होगा, तो ये हम इसको सिंपली यहाँ से मंगवा लेते हैं, और ड्रॉप डाउन के अंदर ही ट्रिगर वगैरह सारा कुछ बना हुआ है.
and we didn't have the टाइप्स. तो टाइप्स हम जो है वो यहाँ पर मैं अगर फॉर एग्जांपल टूल बार मंगवा लूँ तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड आई विल से टाइप्स types. Perfect. So in toolbar we'll get these types and things will be working the same. Okay, my mistake. It's saying that toolbar is not defined. Okay, I have one more problem, which is this one and now this one. It will say just state will import it. It's not going to work out. Fine, no worries. Toolbar, toolbar. Now refresh. Text input is not defined. Okay. One sec. What I can do is that just encode hello and yeah, okay. Okay. So handle request is not fine. Okay. No worries. Handle request भी उठा लो यार यहाँ से. बल्कि ये सारा ही उठा लेते हैं यहाँ से. We don't need this. And place it over here. And come over here. And one and this one. Okay, perfect. So now I serve. Okay. So it says a unique key. Okay. This one. I think so. Yeah. So we will pass one key. Oh, sorry. What was it? Okay. So I would say key type dot id. Now find you class name. Okay. So let's just do this one, man. जहाँ पर सिंपली सिर्फ क्लास लिखी हुई है ना. एंड आई थिंक कि मैंने ये उठाया था. कहाँ से उठाया था मैंने? आई थिंक डैशबोर्ड में था वो, साइड बार में भी, या साइड बार. सो एवरी क्लास नेम शुड बी क्लास. जो ऑलरेडी क्लास है वो उनका क्या करेंगे हम? इसको छोड़ देते हैं एंड थिंक नाउ गुड. इट विल बी क्लास नेम. अब ठीक है. ओके. सो द स्ट्रोक विथ कहीं लगी होगी. इट विल बी स्ट्रोक विथ. सब में चेंज कर दो. नाउ व्हाट? ओके. स्ट्रोक लाइन ज्वाइन should be stroke line join. सब में चेंज कर दो. Now you have a problem. Okay. इसको चेंज कर दो. इसके साथ सारे चेंज कर दो. Now you have a problem. Now we are perfect. Okay. चीज़ें संभालते संभालते उस्ताद बड़ा टाइम लग जाता है यार. Anyways, so ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. Let's just format it and close this one. Perfect. We have a side, we have a dashboard, we have a sidebar, we have a sender request, and then we have a sender request. In sender request we have a toolbar, और toolbar में हमारे पास ये चीज़ आ गई. अब हमने इस toolbar में सॉरी दिस वन वाज द toolbar. अब फ्लेक्स कॉल था और यहीं पर अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट बनाएंगे. और इसका जहाँ पर मैंने toolbar रखा था और इसका नाम मैं रख देता हूँ सेंडर और रिक्वेस्ट हैंडलर. बड़े अजीब से नाम मेरे जहन में आ रहे हैं यार. रिक्वेस्ट हैंडलर डॉट JSX. रिक्वेस्ट डाटा हैंडलर. या दिस इज परफेक्ट. ओके. So I'd say RFCE request data handler request. So if I say something over here, should I get that? I did not get. Oh, sorry. Oh, मैंने
कॉल ही नहीं किया तो कैसे आएगा? Okay. So I will say request data handler. Perfect. Okay, so I got this one. The very main thing which I want to do is that rather than going over here and giving this one P1, P2 or gap X or Kievo, why don't I just do this in a parent component, in a parent div, sorry. So, man, oh man, I just remove the border. No, I need to get the border so that there is a, there is a, there is a, there is a. Uh, okay, fine, man. Need an answer. Gabo. In this one, we will also do class name and pass this one. Okay, perfect now. And we don't need this one. Or maybe we need it. Maybe. I don't know. So let's just go over here. ये बाद में कर लेंगे इसकी खैर. Okay. So I will just paste it over here. If मैंने पता से यही कहना है. I wanna do this one. Okay. Format this one, and we will come over here, and where there is a class name, it should always be class name. मैं देखूं और यार. Okay, now I think we are good, and let's see what do we get, man. Okay, so we have these ones: contact, dashboard, and it's okay. And before we don't need this dark border. Fine enough, fine enough, fine enough, fine enough, fine enough. Let's just go. One. So I think this is good now. Maybe, I don't know. Let's see. Let's see now. Okay, so we have this default tab content which is hidden, and these are those four divs जो कि ये एल आई लगे हुए हैं. इन एल आई को जनाब आला हैंडल कर रही हैं, और ये प्रोफाइल डैशबोर्ड और ये सब चीज़ें इनको हैंडल कर रहे हैं. सो the very first thing we will do is that we will change the should I do this with some use state or something? Maybe, I don't know. We will, most of the time we will see कि क्या करना है. But we will have three tabs, and the first one would be the body, and the second one would be the auth, because yes, we do need it, and the third one would be headers. So headers हम कुछ statically लिख देंगे, but we will dynamic them of course, but with time, everything with time, slowly and steady, man. Okay, perfect. So body, headers, and we don't need these ones के ये जो है वो active रहें. So we only need those जो कि इस वक्त जो है वो active हैं. So the very basic thing we can do is that कि simply सिर्फ, यार ये तरीका भी वैसे ठीक नहीं है. लाइक मेरे पास ये मगरों उतारना हो तो ठीक है, लेकिन I don't know, man. Okay. So let's create one use state, and this use state will contain. जब मैं पहले के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे पहले वाला एक्टिव दिखा देगा. जब मैं दूसरे के ऊपर क्लिक करूंगा मुझे दूसरे वाला एक्टिव दिखा देगा. मुझे जब मैं तीसरे के ऊपर क्लिक करूंगा मुझे तीसरे वाला एक्टिव दिखा देगा. वो मुझे कंटेंट दिखा देगा. आ, बस फाइन.
active, tab active या फिर tabs, or you can just pass it. I don't know. एक्टिव की एक बूलियन स्टेट बनानी पड़ेगी, इज एक्टिव मे बी। अगर दो बनानी पड़ेंगी या एक ही बनानी पड़ेगी? अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास सिर्फ लेट्स जस्ट सी यार, क्या इज एक्टिव, इज एक्टिव, if I say use state snippet, and if I say is active, and it will be false for the first point now। और इस बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर मैं आह लिखूं तो आ जाए, मैं जीत लिखूं तू जीत जाए। Tab, set tab, and the first tab would be the body। if I click on it, yeah, is active रहने दो फिर। इसको हम कर लेते हैं, वन सेक, से tab बास्ता तेनू जम गई यार। ठीक है, कोई नहीं, मैं खुद ही लिख लेता हूँ। set tab, and the first tab would be the default value would be the body। so we'll do this। okay, so by clicking on this one, I don't think so we need all of this। type button, eh, ठीक है। roll tab, we don't need this, we don't really need this, move it, and we'll say set, sorry, on click, on load नहीं, on click, we'll say set tab body। we will also pass this one, और थोड़ा सा मैं zoom in कर लेता हूँ ताकि you can see। so the set tab will be the body, and this would be मेरे ख्याल से ये सही रहने दो, इसका तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है इतना। okay, and we'll just copy this one, pass it over over here, we don't this, so set tab auth, and headers। so over here I would say के ओए ओए क्या कर रहा है यार, मैन, इधर आओ भाई, कंट्रोल एक्स। let's say tab is equal to body, then and show this one, hidden इसमें से remove कर देंगे, and I will do the same thing over here। I think div ये थी तो ये आ गई। okay, I will do the same thing, even though this is not generally good, I mean I'm just, but for the time being I just want to say something कि भाई जी जाने दो ज़रा अभी के लिए। one sec, sorry, my mistake, it should be like this। perfect, and one more thing, tab headers,
uh one sec. Oh, sorry, my mistake. It should be body. So if I refresh it, I get body. If I click on auth, uh it's not giving me this one. If I click on header, it's not giving me this one. So let me see what's the problem over here, man. Okay, so it should be like this one. Set tab headers, और ये headers होगा and ये auth होगा. So if I click on it, I click on it, I click on it, nothing is happening. Only the first one is working because I said I need to remove this hidden. Okay, so now if I refresh, I'm getting the first one, which is body. If I click on auth, I am getting this one. If I click on headers, because it's the same thing, I will just say over here, okay, these are headers, this is auth, and this one is body. Okay, so headers, one sec. If I refresh, I get body. I click on auth, I get auth. I click on headers, I get headers. Okay, so now I would have to do one more thing, which is okay, if I remove this one, what should I get? Nothing. Fixing. Okay, if I say border B2, I remove it. Perfect. So this is the class now. I can just remove this one, border B2. Okay, so I'm getting nothing. But if I say something like uh, class name tab is equal to body, क्या होता था? ऐसे होता था. डायनामिक क्लास कैसे होती थी? Body like this one maybe, border B2 else खाली, or else you can say this one. Is this fine now? Oh, it's not that good. Very frustrated. उसकी वो उसकी वाली क्लासेस किधर गई? uh, tab is equal to okay. लेकिन शहजादे, बात ये है कि अगर मैं ये भी चीज़ यहाँ से उठा लूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, तो मेरी जान, अब तो तुझे चलना चाहिए ना. ये अब उधर क्यों गया? अब तू उधर क्यों गया? वन सेक. बॉर्डर आई एम सेइंग के बॉर्डर B2 आ गया क्लास में. अच्छा 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 अच्छा, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक. आई एम सेइंग कि अगर B2 है, बॉडी है, तो ये करो, वरना ये कर दो. ओके फाइन, ठीक है. नहीं नहीं, सच्चा था, सच्चा था, बुरा नहीं था. बट इट्स एक्टिव नाउ एंड दैट इज़ द मेन थिंग. So we'll just copy this one. We'll just paste it over here. मैं ये क्या है? मैं इनके ऊपर इस तरह करूँ तो ये होता है, मैं इसके ऊपर करूँ तो नहीं होता. Okay. उस्ताद, ये तो फिर बात गलत होगी ना. अगर तो बॉर्डर B2 है, अगर नहीं है तो फिर हो. ऐसे नहीं हो रहा. मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अब हो रहा है. परफेक्ट. सो आई विल जस्ट कॉपी दिस वन, और इसकी जगह मैं कर दूँगा auth. इसकी जगह मैं कर दूँगा header. तो auth एक्टिव है, मैं headers के ऊपर करूँगा, header एक्टिव हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. ओके, परफेक्ट.
But now we have to do one more thing, which is the JSON part. Oh my god, the JSON part. Oh my god, the JSON part. Okay, for the JSON part, what I will do is that यार ये मसला है ना थोड़ा सा कि अब मैं वो जेसन है, अब उसने जेसन वो लिखनी है, तो अब तो वो कहीं भी जा सकता है ना यार, अब ऐसे तो नहीं ना मज़ा आता आता। और दूसरी बात ये है कि वाई देर इज़ सो मच हाइट ऑफ फ्रॉम द अबव, ये है, और इसके नीचे ये है, और ये इसने फालतू का P2 लिया हुआ है। इफ़ आई रिमूव दिस P2, यहाँ चला जाएगा। इफ़ आई जस्ट ऐड P2 रिमूव कर दिया, इफ़ आई जस्ट ऐड P1, एंड नाउ आई थिंक दिस इज़ फाइन। तो ये लिया हुआ था इसने। ओके, लेकिन जो कंटेंट है इसको हम दे देते हैं थोड़ा सा, लाइक फॉर एग्जांपल ये आईडी दी हुई है, लेट मी जस्ट मूव दिस आईडी नाउ, और इसको हम क्लास नेम में P1 दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। हाँ ठीक है, परफेक्ट। लेकिन अभी भी थोड़ी सी स्पेस कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन खैर है, कोई रोने वाली बात नहीं है इतनी। और व्हाट इफ आई से P Py1 एंड Px2 ले ले। हाँ हाँ, समझ में आती है बात। एनीवेज, सो वी हैव दिस वन फिगर आउट। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो ये है कि बॉडी और ऑथ और हेडर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो वो सेट करनी है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं बॉडी में जेसन वगैरह कुछ इस तरह का सेंड कर दूँ, एक सेकंड, थोड़ा सी माई सेल्फ, डज एनीबडी वाचिंग? और मैं ऐवी भाई जा रहा है, कोई वेखर भी दिया है कि ऐवी मैं बोली जा रहा। ओए तेरी बात कर लिया यार। ये रहा। I think nobody is watching. I am the only one who's watching. Oh, no, it's fine. I don't have any problem with that. As long as I'm doing something, I'm making progress, I'm fine. So, let me just get back from the water break. मतलब पानी भी नहीं पीना, बस मैंने और कुछ नहीं करना, बल्कि मैं फ़ोन भी कर लूँ एक साथ, एक सेकंड बस। Okay, so man oh man, जेसन का क्या करें यार, उसमें तो इनपुट होती है और उसमें आप लिटरली जेसन लिख सकते हो। ओके, लेट मी सी हाउ how can I how can I put how can I let user to write JSON React? नहीं, one sec, JSON editor,
जेसन एडिटर ये क्या करेगा भला? हाँ, ज़्यादा दिखा भी तो सही। होम पेज में ये चीज़ दिखा रहा है ये। सच्ची। लेकिन उस्ताद, अच्छा योर जेसन दिस डॉट हैंडल चेंज कुछ लिखेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। दिस डॉट हैंडल एजीवी स्कीम योर स्कीम। एंड डू यू हैव एनीथिंग कि मैं लाइक देख सकूँ? अच्छा टेस्ट में वो कुछ कह तो रहा है, टेस्ट विल बी सोन। मज़ा नहीं आया उस्ताद। कोई वेबसाइट दिखाना फिर तो मज़ा आया। 55,000 लोगों ने कोई कमेंट आए हैं इसके ऊपर। ओके लेट्स सी कि ये करता क्या है एंड लेट्स जस्ट सी। ना मज़ा आया तो फिर रिमूव कर देंगे, ठीक हो। जेसन एडिटर रिएक्ट वन डिपेंडेंसी टेबल कोर नहीं उसके साथ क्या हमारे। देखते हैं शहजादे क्या करते हो तुम। क्योंकि हमने जेसन को राइट करना है, लाइक इट शुड अलाउ मी टू राइट द जेसन। ओके। ओ, वो कह रहा है is unable to resolve dependency react dev 18 from the root project react 17। अच्छा जी, ठीक है जी। ये वाला ट्राई करके देखते हैं। है तो सेम ही है ना, कंटिन्यू दैट। तो हाँ ये चीज़ है। लेकिन मसला है ना, मतलब मैं वो कह रहा है कि भाई जी आ, जेसन व्यूवर है ये। आई वांट टू राइट द जेसन कंस्ट्रक्टर दिस ऑन पेन। नहीं नहीं, आ, नहीं ना दादे। आई वांट टू राइट द जेसन मैन, राइट। ये व्यूवर है, मैं इसमें कोई भी डाटा पास करूँगा ये मुझे व्यू करवा देगा। हाँ ये वो उसके लिए ठीक है, जब हम शो करवाएंगे तो आई कैन जस्ट बुक मार्क इट, सेव कर लेते हैं। लेकिन ये उस चीज़ के लिए ठीक रहेगा। ओके, it's giving me this one again, published 3 years ago, and if I go to his repository it's saying कि भाई जी आप ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो। But a high provider only also you need some loaders in terms of webpack load JSON editor in with वर्जन बिल्डिंग में कुछ बताया नहीं है इसने, क्योंकि मुझे तो ये वाला वर्जन चाहिए और वो ये कह रहा है कि while resolving undefined at undefined। okay, so if I copy all of this, if I come over here and if I put chat, maybe वो मुझे कुछ चीप सा प्रोवाइड कर दे। chat as peer dependency it requires 16 or 17 while you're using it in this type of the common dependency conflict in npm to fix the issue and want to do that।
डाउनग्रेड तो मैं करने से रहा. So is there any other project, sorry, uh library that you similar like this नहीं ये व्यू कर रहा. जेसन एडिटर. Okay, let's see this one. मैं again the same thing. पैकेज दो जेसन में आया तो कुछ नहीं. रिएक्ट डॉम रिएक्ट जेसन एडिटर आया था. लेट मी सी दैट कि इसने किया ये किया. यूज इफेक्ट में इसने एडिटर में ये चेंजेस कर दिए. एडिटर डिस्प्लॉय कर दिया और जेसन एडिटर यहाँ पे सेट कर दिया. I don't know. Let's see this one. Okay, so I got this one. इसमें इसने क्या किया है कि ये दो चीज़ें मंगवाई हैं. और मैं अगर अपने डाटा हैंडल में जाऊं, ये दो चीज़ें मंगवाऊं. जेसन ये लिखी हुई थी और यहाँ पर बॉडी में मैं ये चीज़ पुट कर दूं और जेसन डाटा में ये चीज़. Okay, so the fail to resolve import. Yeah. Does the file exist? I think I know the problem. Ah. Nope, nope. Okay, so let's just go with the first then. चौधरी साहब ने ये काम करने की कोशिश की थी. Let's see. टेस्ट बेंच में कंपोनेंट्स में एक नया फोल्डर बना लेते हैं. फंक्शनल FUNC फंक्शनल फंक्शनल में एक फाइल बना लेते हैं. listen editor dot jsx. Now this path is okay. Same thing. JSON editor is not defined. कौन सा ओ भाई ये यार जेसन एडिटर से मंगवाया यार मैंने. क्या हो गया मैन? व्हाट हैपेंस मैन? कम ऑन मैन. ओके अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे दे मन नहीं यार. अब तो जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे मंगवा लो, बता दे.
ये इसने मुझे दिया रिक्वेस्ट हैंडलर में, ये उसने मुझे दिया रिक्वेस्ट हैंडलर में, एवरीथिंग इज वर्किंग अगेंस्ट द पावर ऑफ द वाइट मैन। वन सेक, लेकिन मैं इसको यहाँ से वहाँ लेके कैसे जाऊँगा? Got it. No, 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 no. Disconnect. एक है फंक्शनल से। La 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 la। So it's not changing that width, ये तो वो वाली width को चेंज कर रहा है शहजादे। So this editor dot run node on change, जो भी होगा उन चेंज के ऊपर मुझे बता देगा। और ये किसका फंक्शन मोड, ओके। ये इसलिए मुझे ना ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ओके, वन सेक, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इफ़ आई क्रिएट इट ऑन माई सेल्फ, देन व्हाट इफ आई डोंट वांट टू यूज सम library, I want to create my custom JSON steps to create JSON.parse and then text area and then this one, then app initialize JSON, then JSON use state, just one
set state this one. So what it did that is valid JSON string try JSON dot pass return true catch error this one. JSON editor JSON set JSON use case stringify JSON that true handle change value this one get and component to edit the JSON uh, edit the helper function to validate the JSON and okay okay create JSON create let's see we will have component JSON editor input JSON viewer helper JSON util app.js okay so it's saying that ये आपका जेसन एडिटर हो जाएगा ओके सो फंक्शनल में जेसन एडिटर मेरे पास वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है आई वुड से कि दिस इज द जेसन एडिटर लेट्स जस्ट यूज दिस वन I don't want to use any other library so a JSON editor input say JSON editor input dot jsx so let's just do this one नंबर ये चीज़ पुट कर देते हैं and JSON viewer dot jsx we will put this one आउटपुट यहाँ पर आ जाएगी एंड देन सर्च हेल्पर टेस्ट बेंच के अंदर ये फोल्डर बना लेते हैं रोज से हेल्पर्स के अंदर this will be a JS file of course let's say JSON utils dot js we will this one and in okay I don't want to JSON viewer मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए I can just do this one handle change मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा and let's see request data handler में आपको जाएं बल्कि JSON editor हम rather than बल्कि मैंने वही मंगवाया हुआ है ना तो let's see कि मुझे एरर ही आया होगा it says के हेल्पर के अंदर मुझे ये चीज़ जो है वो नहीं so okay एक इसमें कह रहा है resources JSON editor फंक्शनल JSON एडिटर में इसको ये चीज़ नहीं मिली ये भी नहीं मिला होगा तो हम इधर आएंगे JSON एडिटर यहाँ से मिल जाएगा वैलिडेट JSON यहाँ से मिल जाएगा तो नाउ इट्स गुड okay no it's perfect I will customize it of course so JSON data handle में ये चीज़ थी and let me see के उस भाई ने ये भी बताया था कुछ इनिशियलाइज JSON बताई और कम ऑन मैन कुछ तो सोच चलो ये मेरे पास JSON पड़ी लेकिन एनीवेज ओके बट लेट्स जस्ट सी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ इनिशियलाइज इसमें नीचे आता हूँ ये भी चीज़ें पुट कर देता हूँ कुछ इस तरह इनिशियलाइजेशन यहाँ पर आ गई और JSON एडिटर में ये यूएल बंद कर देते हैं ये सारी टीवी बंद कर देते हैं और यहाँ पर ये it's saying कि
syntax says Lexel declaration initial JSON before initialization. Okay. Uh, so so it's saying ये चीज़ है. Okay. I will go to एक सेकंड मुझे क्या एरर आ रहा है क्या? So I will go to JSON editor, padding this one, border this one, margin this one, and in JSON editor input we have this one. Okay, so 1 pixel I will say color text area. No? I don't have to do this, but let's go to class name 2. I would say text white, background BG dark gray, BG gray 900. Okay, yeah. Uh, like it. Perfect. It's perfect. Okay, so just one more thing, and that will be font size. Pre, pro, pre, padding. I don't need padding. No padding. I don't need this one. This one is perfect. And with 100%, this is fine. And I think height 300 pixel. I don't think so. Or we can do one more thing क्योंकि ये जो चीज़ है वो ज़्यादा टाइम ले रही है. Let's just go to dashboard and sidebar sender request. Let's move to sender request. We have height 72. But what if I want to give height 72? I would say height 96. Okay, now अब ठीक है. Perfect now. Perfect now. And let's just come over here. Say P4 below है इसको. We will remove the P4 and fine. P1 ठीक है. P4 रिमूव कर दिया और इसमें डैशबोर्ड में इसको जो पैडिंग 20 पिक्सल मिली हुई है ये हम रिमूव कर देंगे. ज़रूरत नहीं है. And then in this div we have this one and then we have text area. So in JSON input padding 20 JSON editor में ये मिला हुआ था. ज़रूरत नहीं है हमें. ठीक है, ये हो गया ऐसे. मैं तू आ जाए मैं जीत लूं तू जाए. टेक्स्ट एरिया था ये. होम चेंज पॉइंट ऑन ऐसे 100 पिक्सल 200 pixel. This is perfect. Now this is what I wanted now, man. अच्छा, अब आप इसको जितना मर्जी, but now there's still some problem and that is कि मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करूँ तो ये इस तरफ को नीचे आ रहा है.
वो कंटेंट ऊपर है, मैंने इसको ऊपर लेके आना है। सो बट इफ आई से 320 still now, I say z and z50 50 अभी भी ऊपर ही आएगा आई थिंक सो। But anyways, this is not the problem for me now. I think so. We have done it. But just one more. Man, कि ये तो ah ये चौधरी साहब MB4 ले रहे हैं और ये कौन ले रहा है? अच्छा ये टैब ले रहे थे। So let's just go to request handler and ये रहा refresh। अभी ये क्या हुआ है? P4 को ले रहा है अभी भी। सो P4 ये था इसको नहीं अज़ल रवा तेरे नी now that's good and there's one more thing के एक ना बॉर्डर सा आ रहा है नहीं यार लेकिन वैसे देखा जाए तो इस फाइन ना इस फाइन ना या इज परफेक्ट बट वी कैन ऑल्सो चेंज सम कलर्स और इस जेसन को अब सेंड करवाने के लिए तो चलो यही जेसन है लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑथ पे क्लिक करता हूँ तो वी अगेन हैव दिस वन बट फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक वी आर गुड यस आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग वी आर गुड बट लेकिन जब हम जिस तरह रिक्वेस्ट सेंड करते जाएंगे उस तरह जेसन को वेरीफाई करना जेसन का कलर वगैरह चेंज करना ये इस तरह की चीज़ें करना फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट you can say ke creating this one for the फुल डिज़ाइन पार्ट आप कह सकते हो कि मैं अभी के लिए डिज़ाइन पार्ट इस फंक्शनल इज़ गुड बट मुझे लगता है कि ये इतना भी फंक्शनल नहीं होगा लेट्स जस्ट से कि मैं अगर इसको रिमूव कर दूं और मैंने वहाँ पर कंसोल लॉग लगाया हुआ था तो लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था फॉर एग्जांपल मैं चेंज करने पे कुछ होता है नहीं हो रहा क्योंकि इसको रन टाइम के ऊपर अभी मुझे एरर देना चाहिए बिकॉज देर इज़ नो कोमा यू नो सो दिस इज़ वाई इट्स नॉट दैट कि ये इतना भी वो नहीं बना लेकिन ऑफ कोर्स टैब पैनल फारिग रहा इसमें आईडी डैशबोर्ड नहीं चाहिए ओके सो फॉर द टाइम बिंग वी आर गुड लेट्स जस्ट गो टू ओथ और ओथ में हम जो है वो एक बड़ी सी यहाँ पर एक इनपुट दे देंगे एंड देन दिस वन इनपुट पूरा ओथ टोकन यहाँ पे पोस्ट पेस्ट कर सकता है एंड हेडर्स हम कहीं से भी उठा लेंगे तो आई थिंक लेट्स जस्ट मूव ऑन टू ओथ नाउ we will say div it will be a flex items center I don't think so and gap x2 one maybe I don't know and this one will contain one label और टेक्स्ट लेबल आप कह सकते हो ना आई थिंक सिंपल लेबल ही जाने दो HTML4 for the auth token and we'll say o auth token and then we will have one input or we can also say text input text input you can just remove this one put this one import it from here and if I go to auth I have this one so rather than having this one we can say कि भाईजान आप class name with जो है वो आप अपनी full ले लें
सा इधर उधर हो गया। विथ आप सर ले लें, नहीं यहाँ पे तो नहीं, आप सर ले लें विथ थोड़ी सी 7 करके ले लें, नहीं ये तो ज़्यादा ही कम हो गया, विथ 32 में भी, या परफेक्ट। एंड I just give you some kind of a padding or token, paste it, and you're good to go. Okay, so we will also have some headers, और headers में content type होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। headers, tailwind, ऑफ कोर्स ये मुझे मतलब वो वाले headers तो नहीं देगा। नाइस, अच्छा ये मुझे वो वाले headers दे anyways, I don't want this, I don't want this. Let's just say कि भाईजान यहाँ पे हो जाए वहाँ पे हो जाए, लेकिन दोनों फिर मुझे वो करना पड़ेगा, उसका फ़ायदा नहीं है। और अगर मैं एक टेबल बना दूँ, टेबल में सिर्फ वो हो और उसमें वो चीज़ आ जाए, ओके, लाइक वो फिर हम जितना मर्जी उसको बना सकते हैं, टेबल फ्लो बाइट अजल से आ रे, नहीं ये वाला टेबल नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए, सिंपल यार, बस बॉर्डर वाला टेबल कोई मिल जाए तो बस बहुत है। कॉपी दिस वन, हेडर्स में आए, पी में नहीं, हेडर्स में आए, यहाँ पर पेस्ट किया, इसको फॉर्मेट किया थोड़ा सा। टी आर मेरे पास ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो आई थिंक कि मुझे ये वाली चीज़ें सिर्फ 2 ही चाहिए, और ये तो मुझे पक्का ही नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दो दो इनपुट्स चाहिए। तो मैं फॉर एग्जांपल ऐसे कर सकता हूँ, I'll go back, I will go to headers, I have this one, color, लैपटॉप, हेडर, और वैसे अगर देखा जाए तो पोस्टमैन में हेडर्स में पोस्टमैन हेडर्स, अखियां दे नाल तू नहीं, okay, so we have key value description, we don't need this, key value content type something, so for the time being because it's static we don't really need this, लेकिन फिर भी हम की वैल्यू रख देंगे, and that's it, say की वैल्यू कंटेंट टाइप, या कंटेंट टाइप, और हाँ ओह वन सेक, कंटेंट टाइप और वैल्यू में 299 आ रहा है, इसको ऐसे कर दूँ तो ओके, एप्लीकेशन जैसे टाइप, बाकी वाले नीचे आई थिंक से रिमूव कर देते हैं। फॉर द टाइम बीइंग वी आर गुड विद दिस वन, अभी के लिए ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, हम इसको एडिटेबल भी बनाएंगे, हम इसको सारा कुछ करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आई जस्ट वांट टू कंप्लीट द डिज़ाइन सो दैट कैन वी मूव ऑन टू फर्दर थिंग्स। वैसे उस्ताद एज जेंगो हो गया उस्ताद, कलर के मुताबिक ही हो गया, बट एनीवेज ये थोड़ी सी लाइन वगैरह आ जाए तो कोई मसला तो नहीं है, लेकिन खैर कमीशन भी ले लें तो फिर भी तो कोई मसला नहीं है। So we'll go to body or address, just one sec, let me get back to you।
Hello, hello. Okay, so as we were, guys, ladies and gentlemen, original, and we will just a little bit zoom out. Okay. Just one sec. Just one more thing. Okay, so we did the body, we did the auth, we did the headers. Now everything is fine. Now there's one more thing that I need to take care of, and that is the environmental variables. Why do we do this? Why don't we do this? And then we can move on to create collection and things like that. Okay, तो इसमें होगा क्या, इसमें we will copy the same thing from here और हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ होगी कि जो होगा हमारा क्या इसे कहते हैं, हमारा होगा भाईजान आ, हम दो देंगे, क्रिएट और लिस्टिंग, लिस्ट दे देंगे और क्रिएट दे देंगे। लाइक वो लिस्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके जितने भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होंगे वो कुछ इस तरह उसको डिफाइन हो जाएंगे, और जब वो क्रिएट के ऊपर क्लिक करेगा हम इसका उसको इनपुट दे देंगे, वो अपनी की और वैल्यू देगा कि मैं इस की बेस के ऊपर ये वाली वैल्यू जो है वो स्टोर करवाऊँगा, बिकॉज इन आवर डेटाबेस आई थिंक सो इफ आई गो टू टेबल प्लस राइट नाउ, लेट मी सी के इसमें मैंने रखा क्या हुआ था, इंस्टॉल अपडेट। मैन कितनी दफ़ा करना है यार आप लोगों ने इसको। ओके, लेट्स गो टू टेस्ट बेंच, और टेस्ट बेंच में मेरे पास इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स थे, की वैल्यू, और ये क्या, यूज़र आईडी ऑफ कोर्स। तो ओके, सो की वैल्यू है हमारे पास, तो इसमें भी हम जो है वो सेम चीज़ करेंगे और यही चीज़ कर लेंगे। लेकिन अच्छा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस चीज़ को मैं दो दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसका एक कंपोनेंट बना लूँ। कंपोनेंट अगर मैं इसका बनाता हूँ तो असल में होगा क्या कि कंपोनेंट को मैं मेरे पास टैब होंगे, टैब 1 2, I don't know man, I will look into it later. Okay, so perfect. Now we will move on to here that
जेसन, ये हो गया, वो हो गया, ये हमारे पास वो टैब्स बन गए। चलो ये तो एक सिंपल सी चीज़ हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में भाई जान। और इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स मेरे हैं, डैशबोर्ड में मैं आया, सेंडर रिक्वेस्ट में आया, ये हमारे पास वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। अब इसमें मैं एक फोल्डर नया बना लेता हूँ, इन ई एन वी के नाम से। इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, सिस्टम सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम डॉट जेएस ना, मैनुअल मैन, यहाँ पे टैब्स डॉट जेएसएक्स RFCE, and now here we will paste the same thing from the डाटा हैंडलर के जो हमारे पास टैब्स थे, आई थिंक टैब्स थे, यस टैब्स थे। तो यार अच्छा नहीं लगता मुझे, ये ना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं क्यों ना इसका एक कंपोनेंट ही बना लूँ और उसको जो है वो मैं यूज़ करूँ। ओके, हाँ एक चीज़ कर सकते हैं हम चुप करके इसको चैट जीपीटी को देते हैं और उसको कहते हैं मुझे इसका कंपोनेंट बना के दे। कैन यू सी दिस नाउ, I am using tabs and their respective content, but now I want to create a generic tabs component so that I can use somewhere to just change the heading। वैसे ना इसमें ये चीज़ हो सकती है कि मैं, लेकिन ये मसला आ जाएगा ना कि कोई भी नेम होगा वो यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि दिस इज़ द फर्स्ट नेम, सो यू हैव टू गेट द फर्स्ट नेम, और ये इसको जो है वो आपने ओपन रखना है। आई डोंट रियली नो दिस, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं उसको एज अ प्रॉपर्टी उसको मैं ले सकता हूँ, उसको मैं वहाँ पे पास कर सकता हूँ, वो उसको पहले में दिखा देगा। और फिर हाँ, मैं उसको एज अ प्रॉपर्टी ले सकता हूँ यहाँ से, उसको मैं यहाँ पर उसको दिखा सकता हूँ कि ये फर्स्ट वन होगा, इसको आपने ओपन रखना है, एंड देन जो भी कंटेंट होगा वो एज अ चिल्ड्रन उसके अंदर पास हो जाएगा। लेकिन कितने होंगे वी डोंट रियली नो दिस, लेट्स सी कि ये करता है। ना 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 ने ना ने ने ना ने ना ने ने ना ने ना। ओके, टैब्स का एक जेनेरिक कंपोनेंट बना दिया उसने उसने किया एक्टिव टैब सेट एक्टिव टैब यूज स्टेट टैब्स एक्टिव डॉट टाइटल उसने ले लिया, टैब्स को मैप किया बटन सेट एक्टिव टैब टैब डॉट टाइटल और टैब का कंटेंट। तो ये उसने एक जेनेरिक मेथड उसको बना दिया कि उसने टैब डॉट टाइटल रख दी और ये उसने ये चीज़ कर दी है। बट एनीवेज मैन, ठीक है, फाइन है, गुड है, आई नो, लेकिन for right now I don't want to look into it. I mean I will do it of course in this stream, if not in this stream then you know I'm gonna do it, लेकिन अभी दिल नहीं कर रहा था। So now for the time being I'll just copy paste the thing. Damn. This one. So we don't have initial JSON, नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे हम, टैब आ गया यहाँ से,
हमारे पास बॉडी नहीं है, हमारे पास है लेट्स सी ये 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 और नीचे भी बॉडी होगा, इसको हम कर देंगे लिस्टिंग या फिर लिस्ट में भी। और पहली हो जाएगी हमारे पास लिस्ट, और लिस्ट में हम जो है वो कुछ दिखा देंगे लाइक टेबल, और टेबल हम उठा लेते हैं यहाँ से असल गवारे, ये टेबल उठा लेते हैं। ओके, ये सब था। तो ये हमारे पास वो वाला टैब हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे हम और ये टैब यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। इसमें कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है, नहीं फाइन है। उसके बाद जो दूसरा टैब है वो ओथ का था हमारा पास, तो हाँ होगा यही, लेकिन इसको हम जो है वो क्रिएट कर देंगे। और क्रिएट टेक्स्ट इनपुट मतलब इसको बाद में सेट कर लेते हैं। हेडर्स हमारे पास ज़रा से भी नहीं होंगे, सो वी विल जस्ट रिमूव हेडर्स। और ओथ हेडर ये भी बटन हमारे पास मौजूद नहीं होगा। और आई थिंक लेट्स सी क्या बनता है, एरर ही आया होगा आई थिंक। ओके, टैब्स मैंने कॉल नहीं किया उसमें, फाइन। यहाँ पर आएंगे हम और यहाँ पर टैब्स टैब्स न्यू इट। और ये कह रहा है कि भाईजान टैब्स द अबव एरर ऑकर टैब्स कंपोनेंट env टैब्स डॉट jsx, लेकिन एरर क्या है, रेफरेंस यूज स्टेटस। ओके, so we have key and value, and now in this auth don't have anything। और लिस्ट में हमारे पास वो आ गया, क्रिएट में वैसे अच्छा सॉरी, आई शुड हैव हियर create। I click on it, nothing is happening, fine। और setting panel text input is not defined, this one, okay, perfect now। so अगर तो उसके पास कोई भी नहीं है तो हम टैब ये वाला दिखा देंगे क्रिएट का। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया काम, यहाँ पर हमें होना चाहिए था क्रिएट और यहाँ पे होना चाहिए था लिस्ट। हाँ ये चीज़ लिस्ट में उसके पास की वैल्यू में वो सारा कुछ आ जाएगा, और क्रिएट में वो जो है वो क्रिएट कर सकता है। एंड वन मोर थिंग विच आई रियली डिड नॉट लाइक is that के why it's not getting the full width, mb1 flex ये वो वगैरह वगैरह flex tab, if I say you give it full है भाई। okay okay okay, all right all right, so uh, problem lies over here, I am not saying ah well ये भी ठीक है, लेकिन नहीं ना यार ऐसे अच्छा नहीं लगता, मतलब ना वी कैन जस्ट से कि उसने विथ फुल ली थी और नहीं इसने ली विथ 2/3। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर आऊँ और मैं इधर आके कहूँ कि टेलवेंट की अपनी वेबसाइट किधर चली थी, अच्छा मेरा ये 2/3 था, 2/3 1/3 now it's like okay fine। so we will also say some kind of a form, और फॉर्म में हमारे पास की आ जाएगी और उसकी वैल्यू आ जाएगी। so we'll say one key, one input for key and one input for value। so in tabs we'll say भाईजान
It will be a form, of course, but let's go with this. Okay. So the first one would be the key, and the second one will be the value, key value, and then there is the button. I would say primary button create. So create, and it will take with full perfect, and ये तो हो गया फ्लेक्स, एंड यहाँ पर हम कर देंगे फ्लेक्स फ्लेक्स होल गैप बाय 4 2 3 ठीक है, e and then value and then create this. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास वो सारा कुछ आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास अच्छा चलो थोड़ा सा इसको भी सेट कर देते हैं। की वैल्यू, अच्छा कंटेंट टाइप जैसे में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेस यूआरएल, आई जस्ट गिविंग द एग्जांपल, और यहाँ पर https लोकल होस्ट 8000 API slash API. So this would be the key. I mean, any number, any key or anything, you can pass it over here. So key and value. And I just want to say one thing that very जो create environmental variables में it will be long text. Doesn't matter. It's fine. String भी पूरी लहरी होती है. Okay. तो जी हमारा ये कितना बन गया, लिस्ट भी ओके फाइन, और ये वो वगैरह वगैरह। just one sec, so we will do this one over here. 5 cigars, pull up with the 5 cigars. Okay, for the timing I think I'm gonna go with this. Yeah, fine. Okay, so oh, सही है यार, ये सही था ना, सही हो गया ना। रिस्पॉन्स कंपोनेंट में क्या करेंगे? रिस्पॉन्स कंपोनेंट में क्या करेंगे भैया जी? टेस्ट डाटा, रिस्पॉन्स डाटा एंड कुकीज। ओके, रिस्पॉन्स में ओवरव्यू पे रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर, हाँ ये रहा। बॉडी या कुकीज है, हेडर्स है, टेस्ट रिजल्ट है, सिक्योरिटी है। डोंट रियली नीड दिस। प्रेडी में हम सिंपल वो जो हमने जेसन व्यूवर बताया था, दिखाया था ना, वो हम यहाँ पे दिखा देंगे जिस तरह हम ऊपर दिखा रहे हैं। जो भी जेसन आएगी चुप करके यहाँ फेंक देंगे, वो ले लेगा और उसको जब हम यहाँ पे दिखा देंगे। रा में, प्रीव्यू में, विजुअलाइज में फ़र्क नहीं पड़ता, बॉडी में सिर्फ यही चीज़ है, इज़ फाइन। रा में उसको चलो स्पेटिफाई या इस तरह का चीज़ है, HTML हुई तो चलो उसको इस तरह दिखा देंगे, और लेकिन ये है कि विजुअलाइज डोंट हैव टू। बाकी ये चीज़ हमें दिखानी पड़ेगी, ये चीज़ तो मैं जानबूझ के दिखाऊंगा कि कितना टाइम लगा। ये वो 200 का आया, 400 का आया, 600 का आया, और 600 तो होता नहीं, लेकिन चलो जितना भी आया हम यहाँ पे हम दिखाएंगे, यहाँ पे इस जगह के ऊपर। आई थिंक इट्स परफेक्ट नाउ। लेट्स जस्ट डू some testing.
या फिर कलेक्शन वगैरह क्रिएट करवा लें। I think this is it for this stream, and I will see you in the next. I think I will see you in the next because it's time now. I'll see you in the next.